Okay, so let's start a new playlist of DevOps. I think this is going to be very similar to your AZ400 certification of DevOps. इसको जो कोर्स आउटलाइन होगा. ओके, सो DevOps के अंदर आपके पास एक होता है, लेट्स टॉक अबाउट लाइक द फाउंडेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्स्ट. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमने दो सबसे मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स पढ़े थे. एक था आपके पास वाटरफॉल मॉडल और दूसरा था आपके पास एजाइल. सो वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमारे पास केस सिनेरियो ये था कि हमारे पास ये जो थे स्टेप्स थे कि फर्स्ट यू गेट योर रिक्वायरमेंट्स, देन यू आर डूइंग डिज़ाइनिंग, देन यू आर डूइंग डेवलपमेंट, देन यू आर टेस्टिंग एंड देन यू आर डूइंग डिप्लॉयमेंट एंड देन यू आर मेंटेनिंग इट, राइट. सो ये सारी चीज़ें आपके पास एक वाटरफॉल मॉडल में थे कि रिक्वायरमेंट्स हो रही है, फिर डिज़ाइन हो रहा है, फिर आपके पास डेवलपमेंट हो रही है, टेस्टिंग हो रही है एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट. एंड उसके अंदर हमारे पास मेन इशू यही आ रहा था कि फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग कर रहे हैं एंड देन यू गेट अ न्यू रिक्वायरमेंट, देन यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड देन डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन. और जब मेंटेनेंस पे भी पहुंच रहे थे तो लाइक बिल्कुल एंड पे जाके हमें पता चल रहा है कि भाई क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हमें जल्दी फीडबैक नहीं मिल रहा था. तो उसी वजह से हमने एजाइल को लेकर आए और हमने बोला कि भाई एजाइल में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बस ज़्यादा जल्दी डिलीवरीज आ रही है हमारे पास, ठीक है. हम स्प्रिंट्स यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास विद इन 2 वीक्स के अंदर पता चल जाता है कि भाई हमारा कोड का क्या स्टेटस है, एंड यू आर इम्प्रूविंग इट विद ईच आइटरेशन. सो इट इज़ बेस्ड ऑन योर रिलीजेज एंड योर आइटरेशंस विच इज़ एजाइल इसी पे बेस्ड है. एक रिलीज़ जो होती है वो बेसिकली होती है एक स्टेबल वर्जन, राइट. और वो बेसिकली जब आता है जब आपके पास सेवरल आइटरेशंस हो चुकी होती हैं और हर एक आइटरेशन के अंदर यू आर मेकिंग श्योर दैट सम टेस्टिंग इज़ डन. और जो एक आइटरेशन के अंदर काम लेफ़्ट ओवर हो जाता है, जैसे कि कोई काम लेफ़्ट ओवर हो गया, कोई बग्स रह गए या बग्स फिक्स करने हैं या फिर आपको कुछ रीफैक्टर करना है, वो नेक्स्ट आइटरेशन पे जा रहा होता है. सो ये जो पूरा प्रोसेस है, these this is much better for larger and more test cases वाले projects के लिए, ठीक है. whereas waterfall models भी अच्छे होते हैं but they are more better for smaller and well defined projects, ठीक है. now what is DevOps? alright, so इससे पहले मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, जैसे DevOps को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा. होता ये है आपके पास एक होती है डेवलपमेंट. पहले ऐसा होता था कि आपके पास एक डेवलपमेंट की टीम होती थी, ठीक है. आपके पास एक डेवलपमेंट की टीम होती थी और एक आपके पास एक ऑपरेशंस की टीम होती थी, ठीक है. एक सेकंड. सी तो आपके पास एक डेवलपमेंट की टीम होती थी और आपके पास एक ऑपरेशंस की टीम होती थी. ना डेवलपमेंट की टीम का काम ये होता था कि वो बेसिकली एक कोड बना के देगा, ठीक है. वो बेसिकली आपको एक कोड बना के देगा और या यू कैन से दैट इज़ गोइंग टू गिव यू a zip file which is going to have your code, it's going to have its instructions, it's going to have its um, other files, other supported files, ठीक है, जिसके अंदर इमेजेस आ जाएंगी या कुछ और सारी चीज़ें आ जाएंगी. एंड ये सारा पूरा एक zip बना के वो एक ऑपरेशंस को दे देता था. और ऑपरेशंस का काम ये होता था कि वो बेसिकली ये सारी चीज़ें ले और उसको फिर डिप्लॉय कर दे सर्वर पर. ना मसला ये आता था कि आपके पास डिप्लॉयमेंट जो डेवलपमेंट टीम के पास कि वो उसके पास एक अपना एक सिस्टम होता था और एक सर्वर पे एक अलग सिस्टम चल रहा होता था. ना सिस्टम पर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स अज्यूम कि ये एक आप एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बना रहे हैं और उसके लिए आपको बेसिकली पाइथन का 3.9 वर्जन चाहिए, आपको ओपन सीवी चाहिए और आपको पाई टॉर्च का फॉर एग्ज़ाम्पल 3.2 वर्जन चाहिए. आई डोंट नो इफ़ दिस एग्जिस्ट, but let's assume ये चाहिए. और ये सब कुछ आपने करके ऑपरेशंस को दे दिया और ऑपरेशंस ने जब सर्वर पे चलाया तो सर्वर पे एरर आ गया और वो एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर पाइथन का 3.8 वर्जन आया था. बेसिकली इसके पास पाइथन का सर्वर पे पाइथन का 3.8 वर्जन था और ये सारी चीज़ें पाइथन 3.9 पे चल रही थी. तो फिर वो वापसी पूछेगा डेवलपमेंट टीम से कि भाई क्या मसला हुआ वगैरह वगैरह. एंड देन इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है. तो लोगों ने ये सोचा कि क्या व्हाट इफ़ कि हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें, एक ऐसा प्रोसेस बनाएं जिसके अंदर डेवलपमेंट और ऑपरेशंस कंबाइन हो जाए.
जिसको हम बोलते हैं डेवॉप्स। ठीक है, तो उसके अंदर ये जो पूरा सारा काम है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोड टू योर डिप्लॉयमेंट टू योर सर्वर, इट इज़ नाउ कंबाइंड इनटू वन प्रोसेस। ठीक है, which is basically DevOps. So DevOps है क्या? DevOps is the union of people. कौन से people? Development and your operations के लोग. For what? For the processes, making them quick and easier, because you want the process to be quick and to be easy. To have products which are fast and stable. ठीक है, कि जल्दी जल्दी प्रोडक्ट भी निकले और वो अच्छा भी निकले। ठीक है, एंड यू वांट टू हैव कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यू टू द एंड यूज़र, यानी कि जो भी जो भी आपके पास कोड बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो जल्द से जल्द वैल्यूबल, एक वैल्यूड एक वैल्यूड यूनिट का आपके पास कोड जो है वो एंड यूज़र को जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, ना व्हाट इज़ कंटिन्यूस डिलीवरी, इस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल साइकिल। तो हमारे पास साइकिल क्या स्टार्ट होता है? प्लान होता है, कोड होता है, बिल्ड होता है, टेस्ट होता है, रिलीज होता है, डिप्लॉय होता है और ऑपरेट होता है आपके पास। सो यू स्टार्ट विद प्लानिंग, देन यू डू योर कोड, देन यू बिल्ड, यू टेस्ट, यू रिलीज, यू डिप्लॉय एंड देन यू ऑपरेट। नाउ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होती है, इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट वैलिडेटेड लर्निंग फर्स्ट। तो वैलिडेटेड लर्निंग के आपके पास कि अभी हम बात कर रहे थे अर्ली डिलीवरीज़ की। जब जब हम एक चीज़ डिप्लॉय कर रहे होंगे या कोई हम कोड पुश कर रहे होंगे या कोई कोड कमिट हो रहा होगा या कोड बेसिकली हाँ कमिट हो रहा होगा, उस पे आपको ये पता चलता जाएगा हर डिप्लॉयमेंट पे या हर आइट्रेशन पे कि आपका कोड या तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई चेंज आ ही नहीं रहा उसमें, या वो बहुत बुरा परफॉर्म हो रहा है। सो हर जितनी ज़्यादा दफ़ा आपके पास डिप्लॉयमेंट हो रही होगी, जितनी दफ़ा आपके पास डिलीवरीज या आइट्रेशंस हो रही होंगी, यू कैन हैव मोर वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट। यू कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर प्रोजेक्ट और योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो this is another reason why agile is very good for larger problems. ठीक है, because you can identify what is your status very quickly. इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। नाउ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। हम अभी जब से बात कर रहे थे कि हमारे पास एक चीज़ थी, कोड आया, ठीक है, और अच्छा उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। एक चीज़ होती है आपके पास रिपोजिटरी, जिसके अंदर आपका सारा कोड रखा हुआ होता है कंपनी का। ठीक है, आप बेसिकली क्या करोगे, कोड उठाओगे कंपनी का, विच इज़ बेसिकली कि कोई पहले से थोड़ा सा काम रखा हुआ या किसी ने काम करके दे दिया था, आपने वो कोड उठाया, बेसिकली आपने फेच किया वो कोड, अपनी चेंजेस की उसमें, और फिर कोड वापसी कमिट कर दिया। ठीक है, जब आप कोड कमिट करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक चीज़ आती है जिसका मसला होता है, जिसको हम कहते हैं मर्जिंग। ठीक है, होता ये है आपके पास मर्जिंग के अंदर कि आपके पास समझो एक डेवलपर 1 है और आपके पास एक डेवलपर 2 है, और इसके पास भी एक शेयर्ड कोड है जो हम इसकी बात कर रहे थे, और इसके पास भी हमारे पास एक शेयर्ड कोड है। इसने कुछ चेंजेस की, इसने कुछ चेंजेस की। ठीक है, आखिरी में क्योंकि शेयर्ड कोड है तो आखिरी में तो कोड एक बनना है, जिसको हम बोल रहे हैं मर्ज कोड। नाउ वी नीड टू मेक श्योर कि ये जो चेंजेस कर रहा है डेवलपर 1 और ये जो चेंजेस कर रहा है डेवलपर 2, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना कर रहे हो, आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो। तो यहाँ पर मर्ज पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना अर्ली स्टेज पे ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कि बिल्कुल आखिरी में पता चले और फिर बंदा वापसी स्टार्टिंग से काम करे। सो जब कोड कमिट होता है रिपॉजिटरी में, तो होता है क्या है कि आपके पास बिल्ड स्टार्ट हो जाता है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जिसके नाम बिल्ड स्टार्ट होता है, एक टेस्ट रन होते हैं सारे उस पर, यूनिट टेस्ट, और आपको फिर आपका स्टेटस पता चल जाता है कि या तो वो कोड फेल हुआ या बेसिकली पास हुआ है। तो जैसे ही कोड कमिट होता है, तो कमिट होने से पहले ये चेक करता है कि क्या मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो आप रिजॉल्व करते हो तो फिर ऑटोमेटिकली बिल्ड चल जाता है, टेस्ट चल जाता है, और फिर आपके पास आपका स्टेटस आ जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, दिस इज़ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। So I'll just read this out, which is that automate tests and builds, which helps to catch bugs issues early in the development cycle, when they are easier and faster to fix. When a developer merges code into the main repository, an automated
process is started, which starts the build of the new code. Test suits are run in the new build to check integration problems. The development team is alerted when the build fails or passes. Automating or automate, basically this is like automating, and it's also reducing the cost of integration. You are getting rapid feedback to the development team क्योंकि आपको basically पता चल रहा है कि कितने successful हैं और कितने failures हैं आपके, ठीक है. Now, CI encourages developers to share their code and unit tests by merging the code into a shared version control repository after every small task completion, क्योंकि यहाँ पे again वो आखिरी में जाके वो shared हो रहा है. Now, जब ये बिल्ड हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, तो हम बात कर रहे थे कि डेवलपर टीम क्या कर रही थी, एक जिप फाइल बना के दे रही थी ऑपरेशंस को. वो जो जिप फाइल होती है ना, उसको हम बोल रहे हैं एक आर्टिफैक्ट. तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का जो आउटपुट जो होता है ना, जो उसका प्रोसेस का जो आउटपुट जो होता है, दैट इज़ एन आर्टिफैक्ट. वो आर्टिफैक्ट फिर क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिप्लॉय ऑन द सर्वर, ठीक है. सो यही चीज़ यहाँ पे हुई हुई है कि प्लान हुआ, कोड हुआ, ठीक है. कोड के अंदर अगेन वो फेच हो चुका है, बिल्ड करेगा, टेस्ट करेगा, एंड दिस इज़ योर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन. जैसे ही कोई चीज़ चेंज करता है एक डेवलपर, कमिट करता है, यानी कि बोलता है हाँ भाई लेट्स गो फॉर इट, लेट्स नाउ अप्लाई दिस चेंजेस टू द मेन रिपोजिटरी. इट builds it, it basically checks for any merging conflicts या जो भी यूनिट टेस्ट आपने रखने हैं वो सारे चेक होते हैं. अगर सब कुछ सही हो जाता है तो फिर आपके पास एक बिल्ड सक्सेसफुल आ जाती है. That is continuous integration. Now, there are 4 pillars of continuous integration, which means कि ये 4 चीज़ें होनी चाहिए continuous integration में. One is your version control system. आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि इसके पास कौन सी वर्जन है, इसके पास कौन सा वर्जन है, और फिर ये वाला कौन सा वर्जन है, राइट. और फिर लेटेस्ट कोड का जो भी वर्जन है उस पर आपको बिल्ड चलाना है. सो यू नीड टू मेजर दिस सम वे. सो उसके लिए वी आर यूजिंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम. Second is package manager. You need to have some sort of a software through which you can like uninstall or install software dependencies. So you need either like NuGet, npm, chocolately, or homebrew, right? So NuGet is for .NET, npm is for JavaScript. You can use chocolately for Python. And देन ये पूरा जो काम था जिसके अंदर यू वर डूइंग लाइक बिल्ड, रन टेस्ट, और ये जो आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो कर रहे थे, ये जो पूरा काम कर रहे थे, ये पूरा एक पाइपलाइन में था, यानी स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स. तो फॉर दैट यू नीड सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ वे टू क्रिएट दिस पाइपलाइन. सो फॉर दैट यू आर यूजिंग आइदर एज योर DevOps, which is paid and it's not open source, and Jenkins is open source. And then you need like an automated build process, which is like doing this build stuff, right? So basically it's running the package manager, it's building it, and it's running your automated tests. So for this you're using Apache Ant, Nant, or Gradle. So those are like the 4 pillars, right? So first you need a version control system. You need okay, another thing that I missed out over here was explaining this. So Git is a distributed source system, and Apache Subversion and TFVC is a centralized. What is distributed and what is centralized centralized source system? I'm going to talk about that in a little while. So as I was recapping, you need 4 things. You need version control system, you need a package manager, you need automated build, and the 4th thing was a CI pipeline. Next, let's talk about what is continuous delivery. So continuous delivery, before I get into continuous delivery, let me explain you a process so you can understand the difference between continuous deployment and continuous delivery. So continuous deployment is also known as continuous deployment to production. So what's the difference? So you're doing some planning, you're doing some coding, you're building your code, and then you're testing it on some unit test, okay? And then you're deploying it to whichever server you want. But वो जो code होगा वो आप you can imagine कि वो एक testing environment में डाल रहे हो फिर से. आप वो production में नहीं डाल रहे हैं. Production वो चीज़ है जो end users को मिल रहा है. और अर्ली स्टेज की जो मैं डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ वो एंड यूज़र को जा नहीं रहा वो कोड. क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मे बी लेट्स अज्यूम कि यू आर मेकिंग लाइक अ वेबसाइट, और कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग नहीं कर सकते. जैसे कि यूज़र इंटरफेस, यूआई को आप टेस्ट नहीं कर सकते ऑटोमेटेड के लिए, automated testing के थ्रू. You actually need to have some person or some QA person to manually sit down and check कि UI सही से बना हुआ या नहीं बना हुआ, ठीक है.
um, एक और चीज़ ये हो सकती है कि आपके पास कोड के अंदर कोड रिव्यू वो भी मैन्युअली होता है, वो ऑटोमेट नहीं हो सकता। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा ये प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, लाइक यहाँ से हम बात करते हैं कि क्योंकि ये तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। एंड इफ़ वी वांट टू वेट, do some manual check and then go to production. This is known as continuous delivery. So we prefer this more because यहाँ पर फिर हमारे पास एक manual check आ जाता है जो हम use कर सकते हैं, and it makes the process more efficient. That's the reason why you would find continuous delivery more as compared to continuous deployment. So ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि process by which the code is built and tested. Again ये कहाँ पर हो रहा है, ये वाली इसकी बात नहीं हो रही, बात की चीज़ बात हो रही है। क्यों? which the code is built plus tested, manual or automatic, automatic भी हो सकता है, and deployed to one or more production stages. यानी कि यहाँ से कोड आया यहाँ पर और यहाँ पर प्रोडक्शन स्टेज पे आया अभी, ठीक है। Deploying and testing in multiple stages helps to improve your quality. CI systems produce deployable artifacts which include infrastructure and apps. So infrastructure as a code का एक concept होता है, ठीक है, और वो basically ये होता है कि it defines if you're working on a cloud machine, so it basically defines as to how many GPUs do you want in a machine, how many RAM do you want to scale up, do you want to scale down, all of that configuration comes into infrastructure as a code, ठीक है। So CI के अंदर वो basically पूरा part आ रहा होता है, और वो basically deployable artifact के बाद आता है, ठीक है। Now automated release pipelines consume these artifacts, ठीक है। So जैसे ही artifact निकला यहाँ से, it is basically being consumed to release new versions. Monitoring and alerting helps to create visuals in the entire CD process. So you can see कि यहाँ पे development हुई, code आया, repository आई है, CI आपके पास part है। CI का part क्या है? यहाँ से start होता है development, basically code and repository इसने fetch की, build किया, run test किया, ठीक है। And then जो deployment वाला part है, ठीक है, that's coming in your continuous delivery. Again, I will talk more about continuous delivery and production stages and all of and the differences of like continuous deployment again in the future video. Now let's talk about agile planning. So agile planning kya hai? If you work with either Jira or maybe GitHub boards, you might understand what agile planning is. But होता ये है कि आपके पास एक होता है to do, in progress and done, ऐसा एक बोर्ड होता है, एंड इसके अंदर आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं विच आर बेस्ड ऑन योर डिफरेंट प्रायोरिटीज। तो रेड बेसिकली मीन्स दैट देर मोस्टली they're the most important task, and then blue is like somewhat important, and the green is like not important at all, but you still have to do it. So this is basically being used to manage tasks, to manage and isolate sprints के कौन से sprint पर आपको कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं, बेसिकली मैनेजिंग योर टीम एंड अडेप्टिंग टू योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। सो over here this is written for Kanban, right? So the difference between Kanban and Scrum model is that Kanban के अंदर you can have new tickets, which means you can have new tasks during the sprint, and in Scrum you don't have that option. सो एंड अगर आपके पास टास्क मोस्टली कंप्लीट हो जाते हैं एक बिल्ड पे, तो आप जाके उसको फिर यू कैन मेक अ बिल्ड आउट ऑफ इट। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग प्रीटी मच सिंपल है कि जब आपके पास कोई थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है एक क्रिटिकल रीजन से, एंड देन इट गिव्स यू एन अलर्ट। Then there is microservice architecture, which is that एक आपके पास एक आर्किटेक्चर होता था which is monolithic, जिसके अंदर आपके पास एक सिंगल लेयर होती थी या एक सिंगल कोड होता था जिसमें मल्टीपल सर्विसेज होती थी। सो इसके अंदर मसला क्या था? एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक चीज़ फेल हुई सारी चीज़ें फेल होनी शुरू हो जाएंगी, इट वोंट वर्क। सो देन वी वेंट टू अ माइक्रो सर्विस मॉडल इन विच वी सेड दैट लेट्स कीप ऑल ऑफ दी सर्विसेज इंडिपेंडेंट, ठीक है, विच इज़ बेसिकली इंश्योरिंग हाई स्केलेबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी। वाई? बिकॉज
सर्विस वन को अलग केटर कर रहे हैं, सर्विस टू को अलग कर रहे हैं, सर्विस थ्री को अलग कर रहे हैं. व्हाट इफ़ सर्विस वन की डिमांड हाई जाती तो हम सर्विस वन को स्केल अप कर देंगे. व्हाट इफ़ के सर्विस टू की डिमांड बहुत कम हो रही, सो हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं. एंड अगेन हाई अवेलेबिलिटी आपके पास कि यू कैन एक्सेस दीज सर्विसेज वेन एवर यू वांट, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इफ़ इफ़ द सर्विस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो फिर उस केस में. So then we are talking about applying DevOps to which projects. So you have two types of projects. You have Greenfield and Brownfield. You can apply DevOps to both of them, but it's more easier to apply to Greenfield because it's a new project. It doesn't has any constraints and it isn't bounded by any business logic or any business requirements. So you can do whatever you want. You can implement anything from scratch and there aren't any constraints on it. Okay. Whereas in Brownfield, it's a bit more difficult because you have a baggage of old business requirements, of old code base, and also the fact that अगर उस पर पहले से काम हुआ हुआ है तो आपके पास एक टेक्निकल डेप्थ आता है. ठीक है, तो टेक्निकल डेप्थ क्या होता है वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. बट जस्ट नो दैट दिस वाज दिस. देन यू हैव टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. आपके पास दो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं. एक होता है आपके पास सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स और दूसरा होता है आपके पास सिस्टम्स ऑफ एंगेजमेंट. सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जो होता है इट्स मोर स्टेबल बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ट्रुथ वैल्यूज एंड इट्स वेरी it's made very slowly at first because you're keeping in mind all of the security principles and all of the best practices and you're trying to ensure that it's the most secure and the most robust system. So an example could be a bank application. Okay. Whereas in system of engagement you're just making applications on the go. You're doing experimentation, you're doing exploration. So they're mostly temporary solutions to problems and they are being monitored regularly. And there is a chance a little bit that it might not be as secure as to your system of records. So this is more as a exploratory based software and that is more of a truth based software. Then you have your types of users. So you have three types of users. You have canary, you have early adopters, and the third is users. So users uh, are the one who are getting the most stable build. Okay. The most broken code is being received by the canary users. So these are also known as fast users, which are getting very bleeding edge features as soon as possible, and actually they don't actually care about the potential risk, and they just want to test things out as quickly as possible. Then the early adopters are the users which are also known as slow users, which are getting a bit more stable build as to the canary ones. And then you have users which are getting the fully stable one. Then let's talk about Azure DevOps. So Azure DevOps is basically the DevOps platform by the Microsoft team, and it is a SaaS-based model. What is a SaaS-based model or software as a service model? That will be explained to you in some other video. But over here, just know that this is a SaaS model. It is an end-to-end development and deployment. It has different features. For example, it has for agile planning that I was talking about here. It has Azure boards. For the pipelines, as I was talking over here, it has Azure pipelines. It can have its own repository, which is Azure repository, as compared to over here, which we were using Git or Subversion as a repository. They also have their own repositories. You can also have Azure artifacts, which is your package manager here. So don't confuse this artifacts with this artifacts. There are different things. And then you have your Azure testing, which is used for exploratory testing. What is source control? Okay. So source control is basically, what is it? It's basically where you're keeping your code so that you can collaborate with other team members and you can have access to the version history as to which version are you working on. So it allows developers to collaborate on code and track changes, uses version history to control your work. It's basically doing it using snapshots. It allows to resolve merge conflicts, which we were talking about earlier. It protects from catastrophe and casual human error, which means if you were making any error, it will raise a merge conflict and it is protecting you from that. Okay, so now let's talk about the different source controls. So you have two source controls. One is centralized source control. So you can see over here that you have one centralized storage in which each of the user is getting the most recent
मोस्ट रीसेंट कोड फॉर्मेट, ठीक है। तो हो ये रहा है के पास यहाँ पर कि हर यूज़र जब भी आएगा, ठीक है, वो सबसे लेटेस्ट कोड लेगा, ठीक है। ये बेसिकली सिंगल सेंट्रल कॉपी रख रहा है। तो एक यूज़र जो भी सबसे लेटेस्ट कोड चल रहा होगा वो बेसिकली यूज़र वन भी डाउनलोड करेगा, यूज़र टू भी करेगा, यूज़र थ्री भी करेगा, ठीक है ना। कुछ केसेस के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि ये स्केलिंग में थोड़ा सा हेल्प कर रहा होता है। लार्ज कोड बेसिस के लिए ग्रैन्युलर परमिशन कंट्रोल होता है, ठीक है। ऑडिट एक्सेस कंट्रोल टू फाइल्स, इट परमिट्स मॉनिटरिंग ऑफ यूसेज। सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है इसका इसका कंसिस्टेंट स्टेट होता है कि हर यूज़र के पास सेम स्टेट पे काम कर रहा होगा। ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि जब भी कोड इनको मिलेगा तो कोड जब रन करेंगे तो वो डायरेक्टली सेंट्रलाइज स्टोरेज पे जाएगा, ठीक है। यानी कि वो कोई भी कोड चेंज करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो मेन स्टोरेज पे या मेन सेंट्रल पॉइंट पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। सो वन यूज़र कैन अपडेट द इंटायर repo. If too many changes, then change set a unit of update as a whole in a version update. यानी कि कहने का मकसद ये है कि मैं इसको एज अ कहानी सुनाता हूँ कि आपके पास सबसे मोस्ट रिसेंट कोड ये है। सुबह 8 बजे कंपनी में बहुत सारे डेवलपर्स आए, उन्होंने सबसे रीसेंट कोड डाउनलोड किया अपने एंड पे, उन्होंने कोड लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। जब उन्होंने कोड लिखना स्टार्ट किया तो एक यूज़र कोड नहीं लिख सकता था क्योंकि वो जब कोड लिख रहा था वो कोड ब्रेक कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास क्या आ रहा था, आपके पास बेसिकली वर्क फ्लो लॉक हो रहा था, ठीक है। दूसरे जो थे वर्कर जो आराम से काम कर पा रहे थे वो काम कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने काम जाके फिर पुश कर दिया और वो आपके पास सेंट्रलाइज स्टोरेज में आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये नया अपडेटेड कोड आ गया यहाँ पर। अब मसले क्या हो सकते हैं? मसले ये हो सकते हैं, क्या पता कुछ वर्कर्स जो काम कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए वर्क फ्लो लॉक नहीं हुआ, ठीक है। उनके लिए क्या हुआ, उन्होंने कोड पुश किया और उन्होंने ब्रोकन कोड पुश कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, हर जगह गलत कोड आ गया, ठीक है। एक ही मसला आता है। दूसरा मसला ये आता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि कोड जब भी बेसिकली आपके पास मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे जब सब अपना कोड फेंकेंगे और फिर जाके आप सब बैठोगे एक साथ और फिर बैठ के मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करोगे। तो इट्स मोर डिफ़िकल्ट टू डू इट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपके पास सिक्योर भी है क्योंकि एक कोड का बेसिकली कोड इन सब के पास है और फिर जब वो कमिट करेंगे डायरेक्टली तो वो डायरेक्टली सेंट्रलाइज स्टोरेज पे जा रहा है। सो टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल्स जो है TFVC जो है, बेसिकली वो यही चीज़ है कि ब्रांचेस जो हैं वो पाथ बेस्ड हैं, क्रिएटेड ऑन सर्वर है, ठीक है। सर्वर वर्क प्लेस कनेक्टेड टू सर्वर सो वर्क फ्लो इज लॉक्ड, हेल्प्स टू स्केल अप टू ह्यूज कोड बेसिस। लोकल वर्क स्पेस ये भी हो सकता है कि आप डाउनलोड हर यूज़र डाउनलोड करे अपने एंड पर, ऑफलाइन काम करे और फिर जब ऑनलाइन हो फिर बैठ के सब अपने रिजॉल्व करें कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसकी मैं बात कर रहा था। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूट सोर्स कंट्रोल। इसके अंदर होता ये है कि आपके पास स्टोरेज अगेन वही सर्वर है लेकिन हर बंदे के पास अपना लोकल रिपॉजिटरी है। तो सब कोड अपना जो क्या करते हैं डाउनलोड करते हैं अपनी लोकल रिपॉजिटरी में, फिर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और जब फिर अपलोड करते हैं अपनी लोकल रिपॉजिटरी में फिर वो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड वो ज़रूरी नहीं कि वो सब यूज़र्स को अफेक्ट करें क्योंकि वहाँ पर यू कैन बेसिकली you can also do you can also like get feedback from one or two developers before like publishing it to the entire repository, so distributed है काफ़ी, ठीक है। each developer clones a repository copy on their local storage। तो उसका क्या मतलब है क्लोन का? We will talk about this in the next video in which I will be talking about the difference between clones and forks। and यहाँ पर इसके बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग हो सकती है, इट्स मोर यूज फॉर स्मॉलर कोड बेसिस, इट्स ओपन सोर्स, इट्स फ्रेंडली, इट हैज़ कंप्लीट ऑफलाइन सपोर्ट, इट हैज़ पोर्टेबल हिस्ट्री, it is better for like greenfield code bases, it's for highly distributed teams, it's working across systems। तो git जो है वो बेसिकली इसी तरीके से काम हो रहा होता है कि आप कोड अपनी लोकल रिपोजिटरी में डालते हैं, सब अपना काम कर लेते हैं, फिर जब कोड पुश कर रहे होते हैं फिर आप बेसिकली या कमिट कर रहे होते हैं फिर आप मर्ज रिजॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर मसला ये था कि जब कोई कोड पुश हो रहा है तो फिर वो ब्रोकन कोड अगर गलती से आ जाता है सेंट्रलाइज स्टोरेज के अंदर
फॉर एग्जांपल अगर यूनिट टेस्ट ने नहीं पकड़ा उसको, तो अब वो बेसिकली ख़राब हो गया है, एंड देन सबके पास वही कोड फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट ओवर हेयर अगर यहाँ पे कोई बंदे ने कोई कोड गलत लिखा लोकल स्टोरेज के अंदर, तो यहाँ पे भी उसके पास एक और चेक है कि यहाँ पे वो अपने आप को फिक्स कर सकता है। So that was all related to the basics of DevOps. Now we will be talking about the future videos. No? Yeah, I don't know.